spider curl with the execution of the waiter curl. लेकिन जो एक्सरसाइज चॉइसेस यहाँ रिप्रेजेंट किए, जैसे वो स्पाइडर कर्ल का जो वेटर कर्ल वेरिएशन, ये जरूरी नहीं है. When it comes to the bicep exercises, guys, the number one you have to start with always is a version of a barbell curl. I said a version of a barbell curl because the standard barbell curl is something we can actually get the benefits of in other ways. I'm going to show you how to actually take that to another level. But the cheat curl is one that I've been preaching here for a very long time because of the benefits it provides us. How is it different? Well, what you see here is that I'm allowing a little bit of momentum to help me to get the weight up, but only if you're using weight that's heavier than you're used to potentially using on a regular performed barbell curl. In other words, what you can concentrically lift. We're going to take care of that again. I said that in a different exercise. Here, we want to take advantage of the fact that our muscles are stronger eccentrically than they are concentrically. So if we can get that weight up via a little bit of a cheat, then we can overload the eccentric, which is a known stimulus for hypertrophy. Now keep in mind, when I go up into this sort of cheat portion here, तो यहाँ Athlean-X ने एक पॉइंट पहले बोली कि बारबेल का एक वर्जन बहुत ज़रूरी है कर्ल के लिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो, आपका अगर बाइसेप स्टिमुलेट हो रहा है, आप डंबल ले लो, बारबेल ले लो, मशीन ले लो, तो आपका बाइसेप स्टिमुलेट हो रहा है तो बाइसेप ग्रो हो जाएगा ऑप्टिमली भी. और अगर आप नॉर्मल बारबेल ले रहे हो, मुझे लगा इजी कर्ल बारबेल होगा, लेकिन नॉर्मल बारबेल ले रहे हो तो वो आपके रिस्ट जॉइंट के लिए भी शायद इतना अच्छा ना हो, क्योंकि ये सुपिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को. तो ये कंसिडरेशन आप ध्यान में रखिए. और जहाँ तक इसेंट्रिक ओवरलोड की बात है, हाँ, इसेंट्रिक ओवरलोड स्टडीज़ में देखा गया है कि थोड़ा ज़्यादा हाइपरट्रोफी करता है, लेकिन हाँ, आपको ये देखना है कि वो डैमेज भी कितना कॉज कर रहा है और क्या वो डैमेज और सोरनेस प्रोपोर्शनल है आपके ग्रोथ को. और दूसरी चीज़, आप फेलियर के बियॉन्ड क्यों ट्रेन कर रहे हो? आपको चीट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? मोस्ट केसेस में आप सब मैक्सिमल आरपीई पे ट्रेन करके ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम के साथ अच्छे गेन्स कर सकते हो. Barbell curl does, and that's progressively overload, but it does so in the form of our own body weight. And this is the chin up. Certainly the best bicep exercise you can do with your own body weight, but it's actually one of the best exercises, period. Because we can add additional weight if we want to continue to progressively overload the exercise. But more importantly here, this exercise trains ourselves to utilize the biceps to not just pull ourselves up to the bar, but also to control that descent. It's another eccentrically overloaded exercise. यहाँ पे तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें सुनने आई है. देखो, पहली बात, आपका बाइसेप जो है वो अगर आपको ऊपर खींच रहा हो या वेट को आपके पास खींच रहा हो, बाइसेप तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अब इसमें आपके बाइसेप को तो डिफरेंस पता नहीं है. और दूसरी बात, ये चिन अप इतना खास क्यों है? आप हवा में झूल रहे हो, आप स्टेबलाइज्ड भी नहीं हो. एक स्टेबलाइज्ड एक्सरसाइज में आपके बाइसेप्स ऑप्टिमली फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे अनस्टेबल एक्सरसाइज में तो ऑप्टिमल फोर्स प्रोडक्शन भी मुश्किल काम हो जाता है. और इनफैक्ट चिन अप जैसे एक्सरसाइज में आप ग्रिप फेल होने की वजह से भी बंद कर सकते हो, खास करके अगर आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो तो चिन अप्स आइडियल एक्सरसाइज नहीं है बाइसेप ग्रो करने के लिए. बाइसेप ग्रो ज़रूर होंगे, उससे काफ़ी ग्रो होंगे, लेकिन ऑप्टिमल की बात आए तो शायद ऑप्टिमल नहीं कहेंगे ऐसे. आगे देखते हैं Athlean-X के क्या पॉइंट्स हैं. Closer to the bar, towards the top of the exercise, you can see the engagement here of the biceps. And as I go down, I can actually lean back just a little bit to accentuate that stretch to once again make sure that I'm getting those eccentric benefits. Usually, the exercise itself in its pure bodyweight form is damn challenging for most people, but if you need be, you have that option to add more weight to keep the gains coming. ये मुझे कुछ समझ नहीं आया. अगर आप शोल्डर एक्सटेंशन कर रहे हो और फिर बाइसेप कर्ल कर रहे हो, तो हाँ, आपका बाइसेप पूरा स्ट्रेच हो रहा है. लेकिन ये आगे वाले पोजीशन में अगर आप फुली लेंथन भी हो जाते हो तो आपका बाइसेप पूरा स्ट्रेच तो हो नहीं रहा है वहां पे. तो ये पॉइंट मुझे 100% समझ में नहीं आया. कुछ समझ नहीं आया, लेकिन देखते हैं आगे क्या बोलते हैं जेफ कैवलियर. There's a reason why there are other things that we're going to show here, and your gains will benefit from watching it, I promise. So let's talk about the next one. It's the dumbbell cross-body curl, and this is going to provide benefits that are different and unique to this exercise that weren't provided from the first two, even though I love those first two exercises. What we're going to do here is we're going to be able to hit the brachialis more effectively because of the positioning of the dumbbell during this exercise. The pronated grip here during the exercise is going to allow us to take away one of the functions that the biceps provides, which is supination of that forearm. And by doing so, we're still getting the elbow flexion component of any curl,
And that's going to be driven more effectively, especially if done at slower speeds, by the brachialis. And there's no reason to avoid brachialis development if you want to build your overall upper arm size. We know that building up the brachialis will thicken the arms, widen them out in the shirt sleeves, and also contribute to the overall mass of the upper arm because it lies underneath the biceps. So no reason to cut ourselves at just 2 guys. Include this one as well, and I promise you, you're going to be happy you did. आपका जो brachialis है शायद इस एक्सरसाइज में थोड़ा और बायस हो जाए, लेकिन आपका brachialis जो है वो आपके नॉर्मल बाइसेप कर्ल में भी काम कर रहा है, तो हाँ यहाँ आपको एक स्लाइट एडवांटेज मिल सकता है. तो देखते हैं आगे और क्या एक्सरसाइजेस बोलते हैं Athlean-X. Alright, so I mentioned that there's other ways that we can curl, and there's actually ways we can accentuate the normal curl, and that is with this banded dumbbell curl. So the dumbbell curl gives us the opportunity to do the more strict standard version of the curl where the overload is really focused on the concentric portion of the lift. But the additional band here is going to apply a different strength curve. We know that when we do a regular curl, the strength curve looks something like this. It's a little bit easier in the beginning, hardest here in the middle, and then a little easier again as we get towards the top. When we use a band, the curve changes dramatically. It starts out pretty easy because there's very little tension on the band, and it continues to ramp up as we go all the way up to the top. It gets to its most tension. Unfortunately, यहाँ पे Athlean-X पूरी तरह सही नहीं है. एक बैंड को खींचने पे बैंड का टेंशन तो इंक्रीज होता जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मसल पे भी टेंशन इंक्रीज करे. सिंपल एग्जांपल के लिए हम एक ओवरहेड प्रेस देख लेते हैं. जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं बैंड स्ट्रेच होकर टेंशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप ये देखो टॉप पे तो कुछ टेंशन होगा ही नहीं क्योंकि ये शोल्डर के थ्रू पास कर रहा है मेरा बैंड. तो ये एक कंसिडरेशन है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम टेंशन है वो मिड पॉइंट पे है बाइसेप के, ना कि टॉप पे. और एक बैंडेड बाइसेप कर्ल से बेटर एक स्टैंडर्ड डंबल बाइसेप कर्ल ही होगा क्योंकि वो आपके मसल्स को ज़्यादा अप्रोप्रिएटली चैलेंज कर रहा है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन. So if we can overlap the two, we can fill in the gaps. We don't have to have that leveling out and drop off in the middle. We can continue to keep that going because the band will provide that for us, and that's exactly what we're doing here. So again, when you want to say that we're limited to just a couple exercises, how are you filling in the gaps of this? You're not. And again, I'm not saying you need to do all of these in every workout, but this should certainly make its way into some portion of your overall biceps training approach. देखो ये वेरिएशन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं बनाएगा किसी भी वर्कआउट को. देखो आइडियली आपको अपने बाइसेप का स्ट्रेंथ देखना है कहाँ पे ज़्यादा है, और वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करनी है. और आपको देखना है कि आपके बाइसेप का स्ट्रेंथ कम कहाँ पे और आपको रेजिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज करनी है. ये बैंड के साथ जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ये शायद इतना ऑप्टिमल नहीं हो. हाँ, आप बैंड का एंगल चेंज करके जरूर चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. All right, moving on, if you're going to build your biceps up, you have to respect the fact that you don't want to just focus on the sweet spot, in other words, the mid-range of all the exercises you're performing, because we also want to apply tension to whatever muscle we're trying to build in the other ranges of motion, the other portions of the overall range of motion, meaning in the area where the biceps is going to be most lengthened or stretched, and the area where the biceps are going to be most shortened or in the contracted position. My choice for that stretch position here is the incline dumbbell curl, but I call this the incline stretch curl because there's a couple things we can do to make it even more effective for that goal. Obviously, you're going to use lighter weights here because you're placing your biceps in the stretch position, and they're going to be weaker anyway. But you want to take it to the next level by applying a deeper stretch. And you can do that by simply pronating the forearms at the bottom of the curl. Now remember, the incline setup itself is going to take your arm and put it back behind your body into extension. And if we realize the full capability of the bicep is not just to supinate and flex the elbow here, but to also flex the shoulder, then taking that shoulder down into extension is something that we want to do. And adding the additional pronation takes care of that second component as well. यहाँ पे Athlean-X ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप अपने बाइसेप को सिर्फ उसके नॉर्मल रेंज में मत ट्रेन करो, शॉर्टेंड पोजीशन में भी ट्रेन करो और एक्सटेंडेड पोजीशन में भी ट्रेन करो. डेफिनेटली. और ये एक इंक्लाइन बेंच सेटअप पे काफी अच्छे से लेंथन पोजीशन भी ट्रेन हो जाता है. और ये जो रिस्ट प्रोनेशन कर रहे हैं उससे बाइसेप को थोड़ा और रेंज भी मिल जाएगा ट्रेन होने के लिए.
The third thing we can do here is we can actually consciously contract the triceps. And I've shared this tip before. When we do that, we're going to get a reflexive relaxation of the biceps that's going to enhance that stretch even further. You perform your curls out of here with the main focus being, I want to provide this tension to the bicep in this elongated position, and it provides yet another unique benefit that the other exercises simply don't. यहाँ पे मैं जेफ के recommendation के साथ agree तो करता हूँ कि हाँ, bottom पे आप अपना tricep flex कर सकते हो, लेकिन मेरे रीजन उसके लिए कंप्लीटली ऑपोजिट है। देखो, अगर आप बॉटम पे अपना ट्राइसेप फ्लेक्स करोगे तो इन रिस्पॉन्स आपका बाइसेप भी बॉटम पे एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो यहां पे आप क्या करोगे? बॉटम में डंबल तो आपको टेंशन दे नहीं रहा है, लेकिन ट्राइसेप से खींच के आप जो उसके ऑपोजिट मसल्स है, एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप को जरूर कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो ये एक अच्छा सजेशन है, लेकिन ये रीजन जरा मैच नहीं हो रहा। And last but not least, guys, again, it's worth the wait. Cutting yourself off at a couple of the big exercises, while I love them, again, it would not have given you the benefit of this exercise, and this is a keeper. I talk about how you want to make sure that you take that bicep and apply tension in that stretched position, but you also have to apply it in the contracted position. And the best way to do that is with one of these exercises. I actually showed you the spider curl in the past, and how getting our arms out in front of our body actually allows for that shoulder flexion, for that supination, for that elbow flexion. तो यहाँ पे जो shortened पोजीशन में जो कर्ल हो रहा है, ये काफी अच्छा ऑप्शन है shortened रेंज में ट्रेन करने के लिए। लेकिन इससे बेटर आप एक प्रीचर कर्ल सेटअप पे भी ट्रेन कर सकते हो, एक स्लाइड प्रीचर कर्ल सेटअप। ठीक है, आपको एंगल ज्यादा नहीं चाहिए 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज का, हाँ, लेकिन एक 15 डिग्री एंगल पे बहुत अच्छा ट्रेन हो सकता है आपका बाइसेप। Your dumbbell in this position here with the dumbbell facing flat up towards the ceiling actually allowed us to get that peak contraction of the biceps, and if you have tried it, you've already probably seen that for yourself. But guess what? Again, always worth the wait here. You can combine the position of the spider curl with the execution of the waiter curl and get an insane bicep exercise, which is what I'm doing here. It actually frees the dumbbell up to travel more freely to the top without the legs getting in the way, and not having to compromise the benefit that the exercise provides in the first place, which is that overload in that peak contracted state. देखो, यहाँ पे अगर हमें शॉर्टेंड पोजीशन में सबसे ज्यादा ट्रेन करना है हमारे बाइसेप को, तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि एक 90 डिग्री सेटअप यूज करके हम एक केबल के साथ कर्ल करें। ठीक है, और ये जो वेटर कर्ल का जो क्वेश्चन है, उसमें आपके रिस्ट बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में, आप रिस्ट को अनकंफर्टेबल पोजीशन में क्यों लेके जा रहे हो? आप एक नॉर्मल डंबल कर्ल कर सकते हो, आप एक नॉर्मल केबल का हैंडल यूज कर सकते हो, उसमें आपके रिस्ट कंफर्टेबल है, और अगर आपके रिस्ट कंफर्टेबल है तो आपके बाइसेप का फोर्स प्रोडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। Worth the wait here, guys, and another reason why you need to sort of look beyond just 2 exercises when you're trying to figure out what exercise to use for your biceps, because they all serve a purpose. In this case here, scientifically, they all serve a specific purpose in our overall training approach. यहाँ पे जेफ ने कुछ अच्छे पॉइंट्स की तो बात की है, जैसे अपने बाइसेप को लेंथेंड पोजीशन में ट्रेन करे, शॉर्टेंड पोजीशन में ट्रेन करे, और उसे स्टिमुलस प्रोवाइड करे डिफरेंट रीजन्स में। लेकिन जो एक्सरसाइज चॉइसेस यहाँ रिप्रेजेंट की है, जैसे वो स्पाइडर कर्ल का जो वेटर कर्ल वेरिएशन है, ये जरूरी नहीं है। देखो, आपको अपने जॉइंट्स को एक फ्रेंडली पोजीशन में रखना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे और आपके बाइसेप जो है ये इफेक्टिवली फोर्स प्रोडक्शन कर पाए। तो ये थी मेरी जेफ कैवलियर की बाइसेप कर्ल की रिव्यू। अगर आपको कोई और चीज चाहिए कि मैं रिव्यू करूं, तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ।